we have assembled here this morning for the inauguration of the classes of our School of Languages. We usually hold it within ourselves in a very homely atmosphere. But this time, this inauguration ceremony has become grander. It has been sanctified, glorified by the presence of two gentlemen who are in charge of the discipline of the state, West Bengal. I cordially welcome Dr. Rajesh Kumar, Director General of Police, Inspector General of Police, Government of West Bengal. It is not all that we hold. If you could not join the IPS or IPS exam, you would have been a great academician as well. These are the qualifications that an Indian police service already apart, Master of Commerce, Doctor of Philosophy in Commerce, in Finance, especially HCA, Fellow Institute of Chartered Accountants, HCMA, Fellow Cost and Management Accountant, MBA, Finance, Master of Business Administration in Finance, MBA, again Master of Business Administration in Human Resources, MIIA, USA, Massachusetts, Interlocal Insurance Association, MIIA, member of the Institute of Internal Auditors, and many more. We have really got among us a really gifted person. And we have no way to say that he is an IPS officer, DG, by chance. He left all these assignments that he earned previously and chose to be the ruler of the country. I congratulate him and pray to the divine above, not above, within and above, to bless him so that his expectations we have are fulfilled. Then we come to another DG, just his predecessor.
youngest of the and formerly Director General of Police, and presently Honorable Member of Staff Selection Commission, Government of West Bengal, Chief Guest. He has many more attachment to the world of literature and art and culture. He is a man of culture. Basically, he has written several books. One book the other day we inaugurated. Book on Karaya, Kavita Sangraha, Vandana, Shiva Vandana, Om Namah Shivaya, Giri. Revered Swami Shri Purnanandaji Maharaj, Honorable Shri Shakti Prasad Mishra, Dr. Rajesh Kumar, Shri Gangeshwar Singh, Honorable Principal Ma'am, respected teachers, and my dear friends. Today, on this auspicious occasion, I, Shri Chakraborty, a student of the English Department, RMIC, feel myself honored to be given a chance to share my thoughts about Swami Vivekananda. When I was asked to share my thoughts about Swami Vivekananda, the first thing that came across my mind was his famous and fiery speech at Chicago, America. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. The lines which didn't only win the hearts of Indians and Americans, but also of millions of people across the world. I humbly salute Swamiji's feeling of oneness. A man who considered each and every person as his own brother and sister, irrespective of their nationality, religion, caste, and culture. He believed that we all are equal and every one of us is so intimately connected that we can never be divided. He had a remarkable personality, imposing, commanding, full of poise and dignity, sure of himself and his mission. He was full of dynamism. When Swamiji was at the peak of his life, India was enslaved by the Britishers. At that time, he appealed to the young generation of the country. Let us all work hard, my brothers. This is no time for sleep. On our work depends the future of India. She is there, really waiting. She is only sleeping. Arise and awake and see her seated here on her eternal throne, rejuvenated, more glorious than she was ever, this motherland of ours. Swamiji dreamt of making India the world leader, and he left no stone unturned to turn his dreams into reality. With this traditional Indian prayer to the Almighty by the students and the teachers, before the classes begin, I offer my grateful thanks and pronounce to Swami Shri Purnanandaji Maharaj, the Secretary of the Institute, and Swami Adipurushanandaji Maharaj for inviting me to this program
as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and also grateful thanks to the principal of the School of Languages, Dr. Shobuj Koli Shen, and my namaskar to Dr. Rajesh Kumar Ji and Sri Gangeshwar Singh Ji. My warm regards to the faculty members who are greatly admired by us for their labor of love, and they love to sacrifice their time and energy for the benefit of the students. Our respects to you as well. And obviously my love and best wishes to the students who are present in this auditorium. As just announced by Mrs. Chakravarti, the topic is the youth of the blessed India, their problems and the opportunities. And obviously this topic has three parts. Number one, the blessed India, the youth of the blessed India. Number two is the problems the youth are facing today and the opportunities for them. Now we have problems, no doubt about it, and definitely there are certain opportunities, as Suresh a short while ago told us that India could be the world leader, and there are in fact immense opportunities. But how come we are called the blessed India? What's the reason? Why should we be proud of being an Indian? The answer was given by one France-born historian, Michel Denino. Dr. Denino was invited by the students and the teachers of Madras IIT to deliver a talk as part of Swami Vivekananda's 150th birth anniversary celebrations. And he himself chose this interesting topic, why be proud of being an Indian? At first he lamented that it is unfortunate that Indians themselves are unaware of the great glory of India, and there is no attempt to glorify India. And then he mentioned 12 major achievements of Indian culture and civilization. He said whether it is technology or spirituality, ecology or democracy, arts or science or literature, India, according to Dr. Denino, had been on top. When at a time when most of the European nations were steeped in ignorance and poverty, जब यूरोप के बहुत सारे देश गरीबी और अज्ञान के अंधकार में डूबे रहते थे. At that time, 5,000 years ago at least, when the great Indus or Harappan or Indus Saraswati civilization flourished, giving rise to great cities, planned cities with an advanced sanitation system, bathrooms for almost all the citizens. Amazing was the standardized weights and bricks proportions thanks to Indian engineers at that particular time. And all remember, कौन थे थे जब यूरोपियन के पुरखे जर्मनी के घने जंगल में रहते थे और नील रंग से मुंह रंगाते थे. At that particular time, Indians were so civilized, so cultured. I am really honored to have been given this opportunity to talk to all of you. And when Vishwajit Maharaj spoke to me that I'll have to come and talk to the students about the Swamiji's message to the students and teacher on strength, courage, selflessness, and all-around development, my first reply to him was that Swamiji's message is so big and large, and such grand message he had given. It is not, I am not the right person to talk about the Swamiji's message to the students and teachers. Then he shared some thoughts with me that you can pick from these. But I would like to share some of the learnings which I had in my life. First of all, I find myself very fortunate. I am born in a village
in Junjunu district where Swamiji had visited Khetri. That is part of the Junjunu district. So I come from there, and when I joined the Indian Police Service, my first assignment was ASP Town North, where one of the area comprised Belur Mutt. And I was fortunate that in this service, I started my duties with all the arrangements, making security arrangements for the dignitaries who used to visit Ramakrishna Mission, Belur Mutt. That was really a good learning experience for me also. And later when I came in close contact with Swamiji's, when I was working as OST to the Culture Minister of the Government of India in Delhi, that time I also closely came in contact with them and learned more about this. So that is where my life started. So how I also listened a good number of things about Swami Vivekananda ji, also learned them. But some of the stories which have inspired me, I would like to narrate them for you. Like Swamiji, one most important thing was, as the students have also spoken about just now, Suvarnit Sarkar, he had given a wonderful speech in Spanish and then Bengali, that be full of questions. He was always full of questions. He was like present day activists. He would never listen to anybody. When Professor Hesty told him that if you want to see the spirituality, what is samadhi, the answer can be given only by one person. That is Ramakrishna Paramhans. You visit there in Dakshineshwar, then only this question, your query will be satiated. You will get a reply of that. So he was, again, because he was full of questions, he wanted to demolish, because he has heard so much numbo-jumbos about the mystics of the time. And he went there, and the first question was this: have you seen God? That was his, because he was such a burning quest inside himself, that his first question was, have you seen God? And then when Swami Ramakrishna replied to him, yes, his question was again, then what is the proof? He said, well, I am the proof. Who else will be the proof? I am the proof. And that is where he became numb. Because what Gurudev told him, कि तुम भगवान को पाने की फिक्री छोड़ दो. परमात्मा तो मिला ही हुआ है, तुम उसको पाने की फिक्र ही छोड़ दो. तुम स्वयं को मिटाने में लगो, वही परमात्मा को पाने का मार्ग है. जैसे जैसे तुम स्वयं को खाली घर बनाओगे, इस द्वार से तुम निकले कि उस द्वार से परमात्मा का पदार्पण हो जाएगा. And that is when he rightly said, when he put his feet on his chest, and then the enlightenment came. He reached into the samadhi state, and he got all the answers which he had. That is what I also learned, how to develop this habit of raising questions also, and also understanding the real answers. Because unless and until you raise the right questions, you will not get the right answers. One more story which inspired me was that when Gurudev was not well at the end of his life, and when Swamiji reached to him, seeing him, he said, Naren, you are बहुत उदास दिख रहे हो तुम, क्या मन में विचार है? तो विवेकानंद जी ने उनको कहा कि बस एक ही विचार है, कब तक मेरे देश के लोग इस मुट्ठी भर अनाज के लिए लाइन में लगे रहेंगे, कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी? तब गुरुदेव ने हंस के उनको कहा कि नरेंद्र, मैं देख रहा हूं तुम्हारा आकाश अब बड़ा हो रहा है. पहले तुम खुद के बारे में चिंता करते थे, परिवार के बारे में चिंता करते थे, अब तुम देश के बारे में चिंता कर रहे हो. धीरे धीरे देखो तुम्हारा आकाश और बड़ा होगा, अब पूरे विश्व के कल्याण की चिंता तुम्हारे अंदर समा जाएगी. और तुम तो इसी के लिए आए हो. बिकॉज आई नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग टू द अर्थ. व्हेन ही सेड, गुरुदेव प्लीज ब्लेस मी with the nirvikalp samadhi, I don't want to achieve anything. He said, no, you don't know what is the purpose for which you have come on this earth.
but I know it. Many things will happen through you. And when Gurudev also asked him one more thing, कि when you see people, what kind of feeling does come in your mind? कैसा भाव आता है तुम्हारे मन में? He said कि मेरे मन में दया का भाव आता है. तो गुरुदेव थोड़ा नाराज हुए और बोले कैसी बातें तुम करते हो? दया का भाव, सेवा का भाव होना चाहिए. कैसे लोगों की सेवा की जा सके, तुम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो कि सेवा में जीवन को कैसे समर्पित किया जा सके. And that was also a learning even for me, that life is more of a service than anything else. And from there, Swamiji's life also changed, and then we know what all he did. So उसी तरीके से कुछ चीज ऐसे गुरु का मिलना भी जीवन में बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है. जो कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय. कि the most important thing in life is to get a very well educated and competent guide. Unless and until you get the guide, you will not be able to achieve the goal which you want to achieve. उपस्थित परम पूज्य स्वामी सुपर्णा जी महाराज, श्रद्धेय शक्ति प्रसाद मिश्रा जी, श्रद्धेय सबुज कली सेन जी, दर्शक दीर्घा में विराजित वंदनीय पूजनीय युवा शक्ति के प्रतिनिधित्व करते विद्यार्थीगण, शिक्षक, वंश, मेरे मित्र, देवियों एवं सज्जनों, इस आज़ादी का अमृत महोत्सव के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं धन्यता का बोध कर रहा हूँ. मैं आप सबों को यथायोग्य नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ. मेरे पूर्व जो वक्तागण रहे, बड़ी विद्वतापूर्ण तरीके से स्वामी जी से संबंधित, युवा से संबंधित, आधुनिक भारत से संबंधित अपने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है. मैं समझता हूँ मेरे हिस्से में बहुत कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, फिर भी मैं अंतिम वक्ता हूँ. भोजन के बाद जिससे पाचन शक्ति ठीक रहे, उस चूर्ण की जरूरत होती है, पाचक खाने की जरूरत होती है. उसी हिसाब से मैं कुछ जो विषय दिया गया है, एक सीमा में रहते हुए, विषय की सीमा है, समय की सीमा है, उसमें मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ. जिनको लेकर के आज व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ है, मैं अपने जीवन में किस तरह से उनको पाया, देखा, समझा, दर्शन किया, उस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मेरे व्यक्तिगत कुछ विचार हैं, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ. इसके बाद मेरा जो विषय है उस पर मैं अवश्य बोलूंगा. अद्वैत वेदांत भारतीय सभ्यता संस्कृति का वाहक है. हिमालय की गुफा कंदरा से निकलकर आम जन की दुख पीड़ा और उसका निदान ढूंढता है, कामयाब होता है. यह ऐसा योगी है. विश्व मंच पर देश का सॉफ्ट पावर, धर्म का परचम लहराता है. उसकी वाणी भारत के गौरव गरिमा वाले अतीत को याद दिलाती है. उसकी वाणी में स्पष्टता है, प्रखरता है, ओज है और तेज है, जो भारतवासियों को जगाती है. अकपट बोलता है, मर्द स्थली पर चोट करता है, भारतीय परिधान में रहता है. उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त प्राण निबोधक से ललकारता है. पहले उठने को कहता है, पहले उठने को कहता है, फिर जागने को कहता है और लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकने की सलाह देता है. देश प्रेम से उतप्रोत व्यवस्था पर चोट करता है, उज्जवल भविष्य का रास्ता बताता है. हाथ थामता है, पथ प्रशस्त करता है. 1000 वर्ष पूर्व वाला शंकराचार्य सुदूर दक्षिण से उत्तर पूर्व
पश्चिम देश के चारों दिशाओं को जोड़ता है, मठ स्थापित करता है। आधुनिक शंकराचार्य पूरे विश्व में आरके मिशन के मठ स्थापित करता है। अपने देश में कुंभ मेले का जो आयोजन होता है, पवित्र नदियों के तट पर गोदावरी है, क्षिप्रा है, गंगा है, फिर गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों के संगम पर जो कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो उस मेले के आयोजन में हमारे संतगण, तीर्थयात्री गंगा, यमुना और सरस्वती में डुबकी लगाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद इन सबसे अलग भी लगे। आप भारत के सुदूर दक्षिण में 3 महासागर, बंगोपसागर, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम में साक्ष से भरी उफनती विकराल धारा में छलांग लगाते हैं। मैं नहीं समझता हूं इस योगी के बाद कोई वहां, उसके आगे और बाद में कोई योगी वहां छलांग लगाया था। आरके मिशन का जो लोगो है वो मुझको बचपन से बड़ा भाता है, कई कारण से। इस लोगो में आपने देखा होगा, ये स्वामी विवेकानंद का बनाया हुआ लोगो है। नीचे में जलधारा है, जल की धारा बहती है। जल की धारा हमारा जीवन, जीवंतता है, कर्म का प्रतीक भी है। उसमें एक हंस है, उसमें एक हंस जो है चलता दिखता है। हंस प्रतीक है। केवल हंस के बारे में कहा जाता है कि वह नीर क्षीर का विवेक करता है। यानी आप जल में अगर दूध को मिला भी दें तो वही एकमात्र जीव है जो जल को और दूध को अलग अलग कर सकता है। हमारे जीवन में भी बुराई, अच्छाई, शुभ अशुभ के विचार जो है वो अलग कर सके, वैसी हमें बुद्धि हो, इसका भी वो प्रतीक है। कमल पुष्प है, फूल फूला हुआ है, कमल पुष्प है, ये कोमलता है। जीवन में रंग होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए। फिर सूर्य है, उगता हुआ सूर्य है। सूर्य अपने आप में पराक्रम है, प्रताप है, तेज है, शौर्य है, इसका प्रतीक है। फिर आप देखेंगे उसमें नाग, फन वाला नाग है, हुड जिसका खड़ा हुआ है वो नाग है। नाग जो है हमारे ध्यान का, मेडिटेशन का एक प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि ये लोगों वाला जो प्रतीक है मेरे जीवन में भी काफ़ी काम है। बहुतों ने कंसंट्रेशन के बारे में बात कही। मिश्रा जी बड़ी विद्वतापूर्ण तरीके से इस पहलू को छुआ है, दर्शन किया है और हम लोगों के साथ में साझा भी किया है। बचपन में मैं जहाँ का हूँ, झारखंड पलामू का, तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, उसकी जितनी भी चर्चा की है कम है। लेकिन जो जहाँ रहता है हो सकता है उसको उतना सुंदर ना लगे। लेकिन फिर बचपन में जब मैं नदी के किनारे जाता था, बचपन में 8 क्लास में हम लोग हिंदी में विवेकानंद के बारे में शिकागो में जा करके भारत का परचम लहराया था। 1.5 पेज का एक लेख होता था, तो उसको पढ़ाया गया था। ध्यान उसमें मेन बात थी, कंसेंट्रेशन, फोकस। तो मैं नदी किनारे, मैं 8 क्लास में पढ़ता था, मैं नदी किनारे बैठता था जब, और नदी की धारा बहती रहती थी, उस पर मैं ध्यान करता था। तो ध्यान करने से हमारे जीवन में जो बदलाव आया, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज भी मैं अपने को धन्य महसूस करता हूँ। और ऐसा तो मैं नहीं दावा करता कि विवेकानंद की तरह मेरी स्मरण शक्ति हो गई, लेकिन जो भी हुआ उस ध्यान के कारण हुआ। मैं समझता हूँ कि आप जो छात्रगण हैं इस चीज़ को आप अपनाएं। इस पर बहुत तरह की चर्चा हो सकती है। ध्यान के कितने, कौन सा योग होगा, कर्म योग होगा, भक्ति योग होगा, राज योग होगा, ये सब अलग तरह की बात है। उस पर आपको जो अच्छा लगे करें, लेकिन इसकी बहुत जरूरत है। আনন্দে বুকটা ভরে গেল, খাওয়া দাওয়া আছে তো নাকি? Before giving the word, students are requested to wait for an announcement.